Class 11, we will take up this exercise 13.2 and see how to find the derivatives from whatever we had studied. Okay, so the first question here, find the derivative of x square minus 2 at x is equal to 10. So see, what you'll do is, suppose I'm representing that whole function by y to show the derivative symbolically easily by dy by dx. Okay, and that is how you denote the derivative, dy by dx. Now the first रूल वही था, हमने algebra पढ़ी है, that finding derivative of any function, if you have sum of two functions, we'll differentiate both the functions. So we'll differentiate x square as well as minus 2. So when you're finding derivative of x square, इसमें कौन सा rule use करोगे? X to the power of n, d by dx of x to the power of n that you had studied, which is n x to the power of n minus 1. 1 less हो जाती है power and it comes in front. So this was x square, so that 2 comes in front, and x to the power of 2 minus 1, that means x to the power of 1. So derivative of x square will become 2x, and derivative of constant is always 0, children. Okay, because constant can be taken as the variable to the power of 0. So अगर आप rule के according करोगे तो 0 into x to the power of something, तो 0 into anything becomes 0. Okay, so this is scalar, तो बाहर आ जाता है, and we can take it as x to the power of 0 here if we want to use that power rule here. So according to the rule, 0 x to the power of minus 1 आएगा, तो 0 into anything is 0 only. Okay, so remember it. ये तो for explaining I am telling you, but आप उसको याद रख सकते हो. As soon as you see a constant, then you know derivative of a constant vanishes, it becomes 0. All right, now the question was not only to find the derivative, it was to find at a particular point, that is when value of x is 10. तो इसको हम ऐसे symbolically लिखते हैं, finding value of the derivative at x is equal to 10. Okay, so that's simple enough. जहाँ पे x है वहाँ पे 10 रख देना है, that's all. Derivative came out to be 2x, so 2 into 10 if we want to find it at x is equal to 10. So the value is 20. Okay, so simple enough. All these questions are like the next function was simply x. So finding derivative of x at x is equal to 1. So if you're finding derivative of x with respect to x, it will become dy by dx. ये तो symbolical form है. And again, as I'm showing you out here, x to the power of 1. X means x to the power of 1. So by power rule again, 1 comes in front. X to the power of 1 minus 1, that is x to the power of 0. Anything to the power of 0 is 1. So you're only left with 1 here, right? So ये आपका 1 आ गया. Now we had to find dy by dx at x is equal to 1. अब अगर derivative आपका constant आ जा रहा है, उसमें x है ही नहीं, तो whether you find it at 1, you find it at 10, at 5, at minus 50, at 100, 500, anywhere, it will remain as 1 only. x होता तो आप उसकी value रखते जैसे ऊपर हमने किया था and evaluate कर लेते. Okay, so that way. Third one was simply 99x. So as per the rule, स्केलर बाहर आ जाता है. एल्जेब्रा में हमने सब पढ़े हैं रूल्स. सो स्केलर कम्स आउट 99 बाहर. यू विल जस्ट फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स. अभी ऊपर देखा था हमने, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1. सो योर आंसर इज 99 into 1, 99. All right, now question number 4 was on by first principle. So first I am covering up the straightforward questions, and then I will in the next video straight away post all by first principle. Okay, so I have moved on to question number 5 here, in which your expression was given as x to the power of 100 upon 100, x to the power of 99 upon 99 plus so on, this whole polynomial or sequence, whichever way you say it. Finding its derivative, that is another way of representing. अगर y नहीं लिखो f हो तो f dash x से represent करते हैं हम derivative. So derivative is, अब इसमें भी वही करना है, सब में power rule लग रहा है. Polynomials में x to the power of n का derivative is n x to the power of n minus 1. So वही हुआ है यहाँ पे, power has come in front and has reduced by 1. Likewise 99 into x to the power of 99 minus 1, 98. यहाँ से 2 in front, x to the power of 2 minus 1, that is x. Derivative of x ऊपर हमने बहुत बार कर लिया है 1. Derivative of constant is always 0. Okay, so आपका वो 100, 100, 99, 99, the coefficients are getting cancelled and you are only left with the derivative x to the power of 99, x to the power of 98. तो ये पूरा एक polynomial आ गया आपका up to 99. ओके, सो अब यहाँ पे है x टू द पावर ऑफ 0 से आप कह सकते हो, या 1 है, फिर यहाँ 1 से लेके 99 तक, तो 99 टर्म्स तो ये हो गए आपके, एंड प्लस 1. सो टोटल 100 टर्म्स आर देयर इन दिस होल sequence or this expression or this polynomial, whichever way you say it. Okay, so now
क्वेश्चन एज पर द क्वेश्चन में हमें f-1 f-0 दोनों रिक्वायर्ड थे फॉर द प्रूफ. सो पहले हमने f-x निकाल लिया फ्रॉम fx. अब हम इवेल्युएटिंग इट एट द पॉइंट. सो एट x इज इक्वल टू 1, replace all your x by 1 to the power of 99, 1 to the power of 9, 1 to any power is 1 only. तो 1 1 1 1 आएगा कितने टाइम्स? 100. I had explained you that here only 1 है and then 1 से लेके 99 तक 99 टर्म्स ये हो गए and plus 100. तो 100 1 1 1s आ जाएंगे. So this sum is equal to 100. Then f-0 करोगे तो ऐसे ही 0 to any power is 0 only. तो ये सारे टर्म्स 0 हो गए, रह गया only 1. Okay, so clearly from here we can see, this is what we had to prove, that value of f-1 is coming 100 into 1, 100. Okay, 100 times value of f-0. So आप इनको evaluate करो and straight away like this you can present your answer. Sixth one on the same line, children. It's simple enough. आपका again आपने वही पावर रूल लगाना है. So this will become n x to the power of n minus 1. a स्केलर है, बाहर आएगा. इसमें आप d by dx करोगे. Okay, आप सबका डी बाई डी एक्स करोगे. एल्जेब्रा ने यही कहा था कि इफ़ यू हैव सम ऑफ मोर देन 2 फंक्शंस आप सबका डिफरेंशिएट ऐड कर सकते हो. सबको डिफरेंशिएट, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द टर्म्स. तो हम सबको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. आई हैवंट शोन दैट स्टेप, वी आर कटिंग इट शॉर्ट. मेंटली कर रहे हैं. इसमें भी पार रूल लग रहा है. तो पार 1 लेस, दिस पार इन फ्रंट 1 लेस, -2 हो जाएगी. n-2 आएगा तो n-3 रह जाएगी. एंड ये स्केलर्स हैं, स्केलर्स कीप कमिंग एज दे आर. तो लास्ट वाले में a टू द पावर ऑफ n प्योरली कांस्टेंट हो गया तो ये वैनिश हो जाएगा 0. एंड a n टू द पावर ऑफ n minus 1 स्केलर था एंड x का डेरिवेटिव इज 1. सो ओनली दिस बिट रिमेन्स. ओके, तो सिंपल इनफ है. नाउ इन द सेवेंथ वन यू हैव d by dx ऑफ x minus a into x minus b. Now for this one, children, you can use product rule. We had studied product rule. Okay, so take this as your first function, this one as your second function. So derivative of first function into second function ऐसे ही multiply हो जाता है, plus first function ऐसे ही रहता है, derivative of second function आ जाता है. Okay, so इसमें भी अब इसका भी derivative होगा, इसका भी होगा. तो derivative of x is 1, derivative of constant 0. तो 1 minus 0 means only 1 remains and second उससे ये multiply हो जाएगा. Likewise, this will come as it is. इधर differentiate करोगे, derivative of x is 1. Number of times we've done it now and derivative of constant 0. So only 1 remains. तो ये क्या आ जा रहा है आपका? x minus b plus x minus a. That is x plus x becomes 2x minus a minus b is your answer. This was when we did it by product rule. Another trick or another way we could have done it is, हम इसको मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं. अभी तक हम पॉलिनोमियल्स का डेरिवेटिव कर रहे थे. सो मल्टीप्लाइड इनसाइड व्हाट डू यू गेट? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी. बाइनोमियल अगर मल्टीप्लाई किया, अब इनको इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. दिस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x पावर रूल से. यहाँ पे माइनस ए, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो माइनस b लेफ्ट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. So anyhow you do it, you will get the same answer. See the second part of this, ax square plus b whole square. Okay, तो आप पहले ये होल स्क्वायर ओपन करके इसको पॉलिनोमियल बना लो, बिकॉज हमें पता है अभी पॉलिनोमियल के हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं. हाउ टू डू इट? ओके, सो वी आर ओपनिंग दिस बाय a plus b whole square. A square, that becomes a square x to the power of 4 plus b square plus 2 into a into b will give you 2 into ab x square. अब सब में पावर रूल लग जाएगा. डेरिवेटिव ऑफ दिस ए स्क्वायर तो स्केलर था, एज इट इज आएगा. एक्स टू द पावर ऑफ 4 का जाएगा 4x क्यूब. सो दिस इज व्हाट यू गेट. ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव विल वैनिश, विल बिकम 0. 2ab विल कम एज इट इज, स्केलर है. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x. सो दिस इज व्हाट यू गेट इन ऑल. कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो, फैक्टराइज करके लिख लो, और यू कैन लीव द आंसर लाइक दिस ऑल्सो. बट यहाँ पे बहुत कॉमन दिख रहा था हमें, 4ax इतना कॉमन दिख रहा था, ले लिया. लेफ्ट विद a, x square here, and here we are left with b. That's your answer. Okay, the next one is applying quotient rule now, because it is in the form of a upon one function upon another function. तो quotient rule क्या था हमारा? Denominator square, then keep denominator as it is, differentiate the numerator, minus sign that was in the formula, numerator as it is, and now derivative of denominator. तो सिंपल एक्सप्रेशंस हैं. दिस विल कम एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए अगेन 1, इसका 1, इसका 0 हो जाएगा, तो ओनली 1 रिमेन्स. देन x माइनस ए, एंड यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड दिस इज 0, सो दिस मच. इसको ओपन करोगे तो आपका x माइनस एक्स कैंसिल हो जा रहा है, एंड
numerator is coming as a minus b upon denominator was already denominator square, that is x minus b's square. Okay.